ये एक रीअपलोड है क्योंकि जो मेरा ओरिजिनल चैनल था, जो पुराना चैनल था, उस पर थोड़ा सा वो चैनल कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। सो या आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो ये एक रीअपलोड है और ये रीअपलोड वाली स्क्रीन तुम्हें दिखना बंद हो जाएगी जब भी मैं नया कंटेंट डालूंगा। सो अभी कुछ टाइम तक के लिए मेरे रीअपलोडेड वीडियोज़ ही आएंगे, मतलब मेरे पुराने कॉम्प्रोमाइज चैनल से वीडियोज़। थैंक यू, एन्जॉय। सो फॉर द पास्ट ईयर और सो मैंने इस पर्टिकुलर गेम को काफ़ी अवॉइड किया है बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू बी स्वेड इन बाय द हाइप एंड दैट गेम इज गेंशिन इम्पैक्ट। बट रिसेंटली मैंने इस गेम को खेलना शुरू किया है। नाउ आई अंडरस्टैंड ये गेम इतना पॉपुलर क्यों है एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड द हाइप बिहाइंड इट। ये वीडियो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। पहला सेक्शन जिसमें मैं गेम का रिव्यू करूंगा और मेरे ओपिनियंस दूंगा, पार्शियल स्पॉयलर्स होंगे, इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट्स के बारे में नहीं डिस्कस करूंगा। और मैं सेकंड पार्ट इसलिए मतलब बेसिकली सेकंड पार्ट को तुम बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ इसलिए एक छोटा सा रिव्यू जरूरी है। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ दिस गेम बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट गेम्स इन द गेमिंग स्फीयर एंड हाउ इट गॉट दिस पॉपुलर एज इट इज टुडे। सो लेट्स डाइव इन। Genshin Impact is a game developed by a company named miHoYo, known for their previous work Honkai Impact and now Genshin Impact, and as well as the upcoming Honkai Star Rail. Genshin Impact एक open world action role playing game है। ये गेम तुमको ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगा besides the Switch and the Xbox। इस गेम का combat काफी deep and smooth है। The combat works on these things called elemental reactions. Before going into elemental reactions, let's talk about the elements themselves. Anemo, Pyro, हाइड्रो, इलेक्ट्रो, क्रायो, जियो एंड डेंड्रो। हर कैरेक्टर के पास इनमें से एक एलिमेंटल पावर होगी और तुम्हारे पार्टी में तुम 4 कैरेक्टर्स रख सकते हो एंड यू कैन स्विच बिटवीन देम प्रीटी फास्ट। नाउ डीप कॉम्बैट यहीं से शुरू होता है, कॉन्स्टेंटली स्विचिंग बिटवीन कैरेक्टर्स एंड यू कैन कंबाइन एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कैरेक्टर्स टू डू सिग्निफिकेंट डैमेज। हर एलिमेंट किसी न किसी के साथ रिएक्ट करता ही है। जैसे तुम पायरो कैरेक्टर्स का यूज करके तुम वुडन आइटम्स जला सकते हो। सो द कॉम्बैट इन दिस गेम इज रियली एडिक्टिव वंस यू लर्न द एलिमेंटल रिएक्शंस। तुम अपने वेपन्स एंड कैरेक्टर्स को अपग्रेड कर सकते हो एंड यू कैन मेक देम इवन स्ट्रॉन्गर यूजिंग आर्टिफैक्ट्स। आई एम प्रॉब्लली श्योर कोई गैंशन प्रो इस वीडियो को देख रहा होगा और वो प्रॉब्ली मेरे आर्टिफैक्ट्स पे देख के चिल्ला रहा होगा भी स्क्रीन पे। I'm sorry. Exploration in this game is really good. Locations and OSTs are amazing as well. Like the exploration is next levels of amazing. Just ये example देखो and remember this is a free to play game. Just look at how amazing the OST and the sceneries are. Genshin Impact absolutely nails the exploration part. Now the thing about me is कि मैं बहुत बोर हो जाता हूँ open world games खेलते समय, but Genshin is one of the few open world games जहाँ पे मैंने more than 6 hours spend किए हैं and in fact I have spent around 30 hours, almost as same as Hollow Knight, and that is saying something. ये गेम तुमको एक्सप्लोरेशन करने के लिए इनकरेज भी करता है एंड रिवॉर्ड भी करता है। लाइक यू विल फाइंड चेस्ट इन द मोस्ट रैंडम लोकेशंस एंड इट फील्स सैटिस्फाइंग। द वर्ल्ड फील्स लाइवली, random events, awesome bosses, commissions and much more makes the world feel truly alive. Some of my favorite characters in this game are Jean, Diluc, Venti, Hu Tao and Zhongli. I love them so much. Now let's talk about the story. It's a typical RPG story. Basically, it doesn't have a strong start. Story की शुरुआत काफी slow है, but becomes really good and picks up the pace later on. The story takes place on a land called Teyvat, and you get separated from your brother or sister depending on who you pick. और तुम्हें अपने sibling को ढूंढना है। काफी vanilla type की story है, and it's good. Like it's really good.
एंड ऑल्सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर सुमेरु जो कि अगला मेजर लोकेशन है गेम में. एंड दिस इज जस्ट अ माइनर इशू बट दिस गेम हैज नो ब्राइटनेस सेटिंग्स. लाइक होली शिट, मेरी आंखें जल जाती हैं रात में. लाइक ओ माय गॉड, एंड दिस गेम flashbangs me in the eyes when I open it. Throwing flashbang. So now a negative about this game. Well, जब तुम मेजर चीजें खत्म कर लेते हो और उसके बाद there's no end game besides the abyss, and even that gets boring real quick. After the story and the main content, you can only farm and do abyss, bosses, daily missions, and finish your resin, and that's kind of where it ends. सिर्फ यही एक मेरा मेजर ग्राइप है इस गेम के साथ, दैट आफ्टर यू फिनिश द स्टोरी कंटेंट व्हिच इज लाइक 30 hours of gameplay and there's practically nothing after that. Of course, the game is still fun to play, but lack of an end game after story is Okay, so now let's talk about the real T-Rex in the room, that is gacha, basically microtransactions. The game doesn't force you to use gacha, and in fact, you can reach the end game with free base characters the game gives you. For gacha, you need these currency named primogems. You can buy them with real money or you can farm them in game. Yes, तुम इस currency को farm कर सकते हो by just playing the game normally and by doing the usual stuff. If I want a certain character, मैं अपने primogems बचाऊंगा उस character के लिए और wish करूंगा जब भी उनका banner का rerun होता है. It's just that simple. मैं completely free to play हूँ और मैंने एक भी रुपया इस game पे spend नहीं किया है and I am having an amazing time. So yeah, you don't need to worry about the gacha or the microtransactions. Now to the final scores. 8 out of 10. The only con of this game is that it doesn't have an end game, जो कि future में आ सकता है most likely क्योंकि ये game constantly update होता रहता है. So you know it very well be on its way. तो मैं basically यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये रेटिंग हो सकता है कि फ्लक्चुएट हो क्योंकि well it's still in development. अभी 5 से 10 साल के लिए और डेवलपमेंट में रहने वाला है Genshin Impact. So yeah, so it's gonna be there. The end game is probably gonna be there. So अभी के लिए मैं भी बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये रेटिंग फ्लक्चुएट हो सकती है. Okay, now to the next section. So why is Genshin Impact popular? Well, quality. इस गेम की क्वालिटी एकदम अलग ही लेवल पे है. It has so much content that it's ridiculous. ऑल्सो ये गेम प्रॉपर वॉइस एक्टेड है और जो वॉइस एक्टिंग है वो भी काफी अमेजिंग है. एंड दिस इज अ फ्री टू प्ले गेम, सो या पीपल आर ऑब्वियसली गोना लाइक दिस मच क्वालिटी फ्रॉम अ फ्री टू प्ले गेम. अनदर रीजन इज एनिमे लाइक आर्ट स्टाइल. आई लव एनिमे. डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटन, माय हीरो एकेडेमिया, टोराडोरा, A Silent Voice, Oregairu, and Tonikawa Kawaii or Tonikawa Over the Moon for You are some of my favorite animes. So, anime art style attract करेगी anime fans को because जब मैंने गेम फर्स्ट टाइम देखा था तो मेरे दिमाग में एक ही थॉट आया था, the anime art style looks amazing with the cel shading, might check it out sometime later. So most लोग इस गेम को उसके anime like art style के लिए खेलेंगे और कुछ लोग इसलिए भी खेलते हैं because simply the characters are hot, which they are, not gonna lie. So one of the main reason is to why this game is liked so much is तुमने सही सोचा, character designs. इस गेम के character designs काफी आइकॉनिक है, like बहुत आइकॉनिक है. मतलब तुमने एटलीस्ट एक बार एक ना एक कैरेक्टर तो तुमने इस गेम से देखा ही होगा या तुम ऐसे ही recognize कर पाओगे. It's just that popular. Genshin Impact की कम्युनिटी काफी बड़ी है, I mean काफी बड़ी है. तुम मीम्स देख सकते हो, तुमने कुछ ना कुछ मीम्स देखे होंगे एटलीस्ट, and it's like very very big. All in all, the community is massive. Fan arts, memes, etc. etc. Compared to other gacha games, Genshin सबसे ज़्यादा quality provide करता है. It features an amazing 3D open world with a lot of different enemy types and environments with breathtaking views. And another reason is great marketing. Marketing trailers में तुमको amazing visuals देखने को मिलते हैं, gameplay भी, और कुछ स्टोरी या कैरेक्टर टिडबिट्स भी तुमको देखने को मिलेंगे. So that makes you want to know more about that character and the story, so you install the game. And the game updates constantly. कुछ ना कुछ नया आता ही है हर अपडेट के साथ. So why is it popular? Let's summarize. Anime like cel-shaded art style, strong core gameplay and quality, community, great marketing, a good overall narrative, amazing character designs, and free to play. The most important part. Genshin is an amazing game. I highly recommend it. So hey guys, अगर तुमको ये वीडियो देखने में मजा आया हो तो please drop a like and share if you like और comment your thoughts on the video. और अगर तुम्हें Jurassic Park related content में interest है, so you can go and check it out my main channel. Also you can go and follow me on social media. Links are in the description. और lastly, please subscribe to the channel if you like the content और bell notifications को दबाना मत भूलना, नहीं तो तुमको मेरे वीडियो के future notifications नहीं मिलेंगे. And that's all for me. Have a good one. Peace out.